Oh, by the way, we are going to have some ice cream after this, hopefully. So, yep, it's gonna be nice. ओके सो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो अब हम जा रहे हैं बैंड्रा रेक्लामेशन। वहाँ पे ना लाइट्स लगते हैं वो टर्निंग के वहाँ पे, तो मैं लास्ट ईयर में मिस कर गया था। सो आई जस्ट टोल्ड माई सेल्फ कि नेक्स्ट ईयर मिस नहीं करेंगे। सो वहाँ पे जा रहे हैं अभी। So let's show you this. We are gonna go there. Okay. ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे। फिलहाल मैं माइन से बैंड्रा जा रहा हूँ, वो तो पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। Oh, by the way, we are going to have some ice cream after this, hopefully. So yep, I feel like मेरे को बेल लेफ्ट में रखना चाहिए क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से चला रहा हूँ। एंड probably this is not a good frame, but I hope लाइट आ रही है। So this story is मैं लास्ट ईयर ओडिशा में था and through Instagram only I saw few of my friends post pictures of this place of Reclamation, which is very known to me. So I was like, this is so beautiful, so मेरे को देखने का है। बट फिर मैं ओडिशा में ही था लाइक जैन के फर्स्ट वीक तक, एंड तब तक ये लोग ने निकाल दिया था। सो वी आर रीचिंग दैट प्लेस। हाँ, पता इसका एडिट कैसे होने वाला है। होपफुली अच्छा निकले। यू माइट लाइक द आइसक्रीम पार्ट मोर।
पे गाड़ी लेके अगर आओगे तो ट्रैफिक हवलदार वो आपको हटा देता है. सो प्रेफरेबली कम विथ योर बाइक और साइकिल. साइकिल इज़ द बेस्ट क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगता है. लाइक यू कम ऑल द वे साइकिलिंग जस्ट टू सी दिस प्लेस. डिफरेंट लाइट, काफ़ी उजाला. द मून है वहाँ पे. What a day, what a day, what a day. I have something to show you. So, एक second. हाँ. So this book I just brought it with me. मैंने ये last year ही buy किया था. Okay, it's a very good book. It's a very short book by the way, and it talks about life. And मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, but I've read like few chapters. तो ये book के कुछ chapters बहुत अच्छे हैं. And the reason I brought it here was just because our lives are like very colorful usually, but we find very grey areas or black and white areas, and we need to understand that it's one whole big spectrum of colors. तो ये बुक के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स जब मैंने पढ़े, मैंने हमेशा लाइक वही ऑब्जर्व किया है कि द राइटर टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रास्ट ऑफ गुड एंड बैड, ऑफ लव एंड पेन, एंड दे बोथ गो हैंड इन हैंड. सो एज दिस ईयर इज़ एंडिंग, आई नो वी हैव लाइक फेस्ड अ लॉट, और अभी पे प्रवचन दे रहा हूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़. आई फेल्ट लाइक कमिंग हियर. आई आस्क्ड few friends, but सब busy थे, which is okay, but the thing is not to get disheartened and live your life, you know, like खुद को entertain करो. Someone once told me very early on, but मेरे को वो बहुत late hit हुआ, that you are going to be with yourself for your entire life. तो खुद का care लो. Right now ये जो मेरी केयर लेती है, एंड आई लव हर. उसका नाम क्या रखूँ बोल देना प्लीज़.